now what's confirmed is that Air India will not be taking in on board Shankar Mishra, and these other airlines are also will be following this particular suit. So it's a big breaking, as it was our campaign at Republic TV that we wanted justice for the victim and such harsh penalty for PG. Well, in fact, finally this decision has now been taken. Many would say that this perhaps is a decision taken only after there was a sustained campaign that was carried out by Republic Media Network for the justice for the victims, as Madhurima was also pointing out. And let's not forget, there's been an attempt recently made by Shankar Mishra and his legal team to put the blame on the victim herself. Now, that was the bizarre argument that was put forth by the airline's crew members who gave that latest details. We're also bringing in right now my colleague Harsha, who's getting us the latest details. Harsha, just a quick update from you. The procedure that has been laid out right now, it turns out that almost all airlines are now coming together, taking a decision of banning Shankar Mishra. कर दिया that finally Air India has decided an internal meeting. The internal meeting was conducted by CEO Campbell Wilson in Mumbai, and in the internal meeting it was decided that 30 days ban is not enough for the kind of thing which he has done in the Air India Airlines, and therefore now the ban has been moved for 4 months. Now Shankar Mishra has been banned by Air India for 4 months. No other flight has yet banned Shankar Mishra, but we are picking that it was decided in internal meeting in Mumbai, which has happened yesterday only, and shortly the press release will also be shared by Air India shortly. But the Campbell Wilson CEO in the meeting was very much not in favor that the 30 days ban is not sufficient. Therefore now Air India has banned Shankar Mishra from all the travel airlines, domestic and international, for 4 months. Back to you, Shavan. Well, thank you very much, Harsha, for getting us the latest details. Our continuous coverage of the latest flashpoint between the wrestlers and its federation. The wrestlers here now demanding justice. Top legends here camping at Jantar Mantar. We'll get you all the latest details on the other side of this short break. Indian sport champions continue their protest against the federation. It is a big Republic Newsbreak impact. The centre is now likely to form a 3-member committee, sets a 72-hour deadline for the WFI. और हरियाणा के खिलाड़ी भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार-बार मौका दिया जाए। और मैं आपको बताने वाला हूँ, इन किसी खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल लाने वाला नहीं है। In the dock for harassment charges, Wrestlers Federation of India blames the champions instead. मेरा बेटा को पुलिस ने भिजाया में सरेंडर कर दिया। बस वो गलत किया तो कर देंगे, बस पुलिस वाला करेंगे। The Telangana BJP chief remains brazen over his son's assault tape targets Republic TV now. Open and shocking VVIP racism in Bihar's Buxar. A train is stopped for 15 minutes for the chief minister's convoy. The Prime Minister is to visit Maharashtra and Karnataka, set to inaugurate mega development projects. Fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. Amongst an agenda focused on housing, child poverty and climate change, we encountered a major biosecurity incursion, a domestic terror event, a major natural disaster, a global pandemic, and an economic crisis. The decisions that have had to be made have been continual and they have been weighty. But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes,
And I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. Right now I'm reporting from the Jantar Mantar of National Capital, and behind me are the wrestlers who are protesting at this point in time. You can see Bajrang Punia sitting there, you can see many other faces who are करो क्या करें भाई साहब All right, viewers, we're getting this. We're just waiting for that press conference to begin. News briefing. Just going to start in a short while, viewers. We have our reporters on ground. We have Shravan Sen, a senior editor. We have our correspondents as well, Madhurima as well, at the spot right over there. And just waiting for that news conference to start in just a short while. The wrestlers are continuing their protest on day 2 against the sitting BJP MP and the president of the Wrestling Federation of India, Brij Bhushan Sharan Singh. And Olympic champion Bajrang Punia has told everyone present at Jantar Mantar that they are continuing with the demand to make sure that he is sacked. Now remember that he will be resigning. That's a big Republic impact coming in. That the WFI chief will be putting in his papers. He will be stepping down. So we are seeing that it's a big win coming in for the wrestlers and a big Republic campaign at the same time. Many demands being made right now by the wrestlers. या लड़ाई थारे खातर लड़न लाग रहे हैं या थारे खातर लड़न लाग रहे हैं भाई या कुश्ती बचाने तो ये लड़न लाग रहे हैं थोड़ा दायरा बनाए रखो तुम पहला नहीं है अरे भाई यार व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो यार चुप हो जा भाई ओ छोटू अरे यार हद होगी In a short while from now, the wrestlers who are camping here at Jantar Mantar would finally be addressing the media. This comes after a marathon meeting that took place between the representatives of the wrestlers with the sports secretary at Shastri Bhavan in the national capital. Is a resolution in sight? Is that big question that we are asking at this point in time? What is it that the wrestlers are now asking? One, they're essentially looking at a complete overhaul in the functioning of the Wrestling Federation of India. Second, an impartial investigation into the allegations that have been leveled by several of the athletes with regards to sexual harassment, starting from the WFI president to also the national coaches who have now come on the radar.
Now, what's important to point out here is that the government has made it very clear that they've asked for an explanation from the WFI president. In fact, he's been asked to respond within 72 hours. And secondly, with regards to the functioning itself, whether at all there have been any assurances given by the sports ministry, that's not clear. We're waiting for clarity to come in. In a short while from now, perhaps the press conference is also going to begin. We'll try and cut across to the latest, to the press conference to get you the latest as to what's really happening. But let's just recap for all our viewers who are tuning in right now. How did it all start? How did it all start? Was this extremely spontaneous in nature? Yesterday, roughly around 10 o'clock in the morning, is when the wrestlers, some of the top names, started camping here. Starting from Sakshi Malik to Bajrang Punia, all came here, they gathered here, and the sit-in, the dharna basically started. The allegation was that they are looking at a complete change. We'll come into the details of that. Around 4 o'clock last evening is when the first press conference was done by Bajrang Punia and the others who were sitting here. And that's when those sensational charges were leveled against the Wrestling Federation of India president of sexual harassment, and also the fact that for the longest of time there was absolutely no resolution whatsoever. Thereafter, the Wrestling Federation of India made it abundantly clear that these are politically motivated complaints. Now, when we asked this particular question to the wrestlers here last evening, they said that there is nothing political about it. In fact, there was an attempt that was made by the wrestlers here when you had left leaders coming here. At that point in time, they had made a request to Brinda Karat saying that she needs to step down from the stage because they do not want to make this political in nature. That was the same time when Bajrang Punia and others had gone to the sports ministry and they had a dialogue with the sports secretary. We do not know at this point in time whether at all there have been some sort of an assurance that has been given by the sports ministry to the wrestlers. That's not very clear. That clarity only likely to come in once the press conference takes place. But almost everyone asking this question, that do our sports persons really deserve this? The fact that they have to be here on the streets to make their demands, that in itself is perhaps one of the most shameful chapters of Indian sports. The fact that those who have brought in the laurels, those who have made the country proud, are finally sitting here so that the government, the sports administrators take note of the situation. What is the response so far? The Wrestling Federation of India president, who was confronted by Republic TV, was asked this question, that you are facing grave allegations. Would you or would you step? The response. आपके मीडिया के लोग हैं आप सभी को नमस्कार और सभी देशवासियों को नमस्कार। अगर इससे बोले तो ठीक है। भाई तुम बजाओ प्लीज। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का धन्यवाद हमारे से दोबारा से जुड़ने के लिए। और जो चीजें अभी चल रही है आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कल बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो आज जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है। वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे।
हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर, आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो। कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है। वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ आप लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी अगर आप
देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने PM सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है। तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है, इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से एक सेकंड अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। सर हमारी टाइमलाइन तो 1-1 घंटे की है, हम 1-1 घंटे का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं, कोई हम
रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी। हम नौजवान बैठे हैं, सब हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आज आत्मसम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी। अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है, उनके जवाब से हम संतुष्ट रहे नहीं रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर, जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है। किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा? क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, XYZ किसी के साथ में भी, वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी? काफी गंभीर एलिगेशंस है, इस मामले पर कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेट की लड़कियां हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। कल हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ खड़ी हैं। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो, कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है जी, यही रेसलिंग फेडरेशन है हिंदुस्तान का, यही रेसलिंग फेडरेशन है जो आपके सामने बैठा है। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो कब रिजाइन करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा? हम डिसाइड करेंगे कब वो रिजाइन देंगे। और आज अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोस कार्रवाई की कोशिश पूरी। आज क्या अभी दे दो, हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे। और वो तो फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी, जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई। जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आंखें दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें? वो आंखें कहाँ गई आज जो आंखें डराती थी हमें? जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, उनको बनाया जाए, उनको पता है रेसलिंग का। अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर हैं, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन की गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहां बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहां बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे तो वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचेज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। किसने बोला जी? हमारे पास कोई मैसेज नहीं, हमारे पास कोई, हाँ देखिए गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है,
और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका अब मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। हम कल से अपील ही कर रहे हैं सर, पीएम मोदी से ही अपील कर रहे हैं। हम देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए। रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए। रेसलिंग फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में। बिल्कुल रहेगा जी, जब तक जान है तब तक जहान है। देखिए, आप लोगों को पता है, पुलिस के लिए हम अगर जरूरत पड़ी तो कल ही करेंगे। और कल मीडिया के आपके लोग थे, मीडिया के, जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, उनको थप्पड़ मारा है, कमरे से भगाया उनको, तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। बच्चों से जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है। बच्चों को पता है गलत है, पर वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमजोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको। तो वो जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो झूठ बोल के भाग रहे हैं। बस जो वीडियो बना रहे हैं वो रैंकिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे गए हुए हैं ना, जो उनके गढ़ में गए हुए हैं, वो उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं। वो उनका गढ़ है, वो उनका आतंक का अड्डा है जहाँ पे वो वीडियो बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस सब जंतर मंतर पे आके वीडियो बनाए जैसे हम बनवा रहे हैं, तब उनकी ताकत को पहचानेंगे, तब उनको मानेंगे कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने कुछ गलत नहीं किया। मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना, आज कल हमारे पास अगर 1 से 2 लड़कियां थी, आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आई हैं, जिनके जितना समय बढ़ता जाएगा अध्यक्ष जी के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और वो बोल रहे थे ना फांसी का फंदा उनको खाना पड़ जाएगा, बोल दिया गलती से, उनके मुंह से निकल गया, जुबान गई फिसल, और जुबान फिसल गई। हम पहलवान बड़े जिद्दी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिद्दी, जिद पे आ रहे हैं। अगर वो नहीं भी लेंगे ना, वो अपने मुंह से बोल देंगे हमने गलत किया है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल अभी देखो कल का इंतजार है। अभी कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई अभी आया नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, तो कल की वेट है। अगर कल तक कोई हमारे पास कोई ठोस बात नहीं आती कि हम ऐसे ऐसे कोई एक्शन ले रहे हैं, तो कल हम फिर FIR के लिए भी जाएंगे। मैडम मेजॉरिटी तो वही होती है कि लेंगे, करेंगे, होगा, आप वेट करिए। बस वही कि हम कर रहे हैं, जांच चल रही है, कर रहे हैं, ऑन पेपर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हम तो खिलाड़ी, हमें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब इस्तीफा आएगा हम तो तब मानेंगे कि ये चल रहा था। अब वो चल के इस्तीफा आ नहीं रहा है तो कैसे मान ले क्या चल रहा है। हमने किसी से समय मांगा नहीं है, समय मांगने का टाइम तो जा चुका जी। अभी समय देने की बारी है। खेल मंत्री जी अगर समय देंगे, अगर हमसे मिलेंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, और अगर उनसे बात नहीं हुई तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के तो पास जरूर ही जाएंगे। खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर होंगे जी, अनुराग ठाकुर सर की हम बेटी कर रहे हैं, बात हो जाएगी। कुछ भी अगर होगा, उससे आगे जितना हुआ उतना बता दिया है, इससे आगे जो भी होगा हम आप सबको बताएंगे।
जी नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक निर्णय नहीं हो जाता। धरना एक मिनट बेटे, एक मिनट। हेलो एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। धरना प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन नहीं हटने वाला जब तक न्याय नहीं हो जाता। परसों भी चलेगा, जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा न्याय नहीं हो जाता। कल भी सभी पहलवानों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि कल भी 10 बजे से धरना होगा और सभी पहलवानों से रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दे। 10 बजे कल यहाँ सभी गेम वाले आओ, सब आमंत्रित हो, हमारा साथ दो कुश्ती को बचाने के लिए। अभी हम यहीं हैं, कल सुबह से 10 बजे से फिर से धरना चालू होगा। आप सब क्या करोगे तो प्लीज So you just heard that briefing that has concluded. The champions are back on the roads. They say that please do not compel us to name and shame those who sexually harassed our female wrestlers. We'll continue to keep our top focus on that story after this very quick break. Fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. Amongst an agenda focused on housing, child poverty and climate change, we encountered a major biosecurity incursion, a domestic terror event, a major natural disaster, a global pandemic and an economic crisis. The decisions that have had to be made have been continual and they have been weighty. But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. Right now I'm reporting from the Jantar Mantar of National Capital, and behind me are the wrestlers who are protesting at this point in time. You can see Bajrang Punia sitting there, you can see many other faces who are very known and have got a medal for the country, and they want the federation to be changed. आप पहुंचते हैं सीमा सुरक्षा बल सर। लास्ट पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट वाज डीजीबीएसएफ सर। डीजीबीएसएफ में उन दिनों देखिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कश्मीर की। कश्मीर में उस समय आग लग चुकी थी सर। हाँ, आग लग चुकी थी, बुरी तरह से लग चुकी थी। बीएसएफ के पैर जम चुके थे, बीएसएफ की धाक थी। मैं सोपोर का दौरा कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि दूर कोई झंडा फहरा रहा है। ये किसका झंडा है भाई? उसने बैनर, उनका सर ये पाकिस्तान का झंडा है। मेरे तो सुनते बदन में आग लग गई कि पाकिस्तान का झंडा मेरे आंख के सामने फहरा रहा है, हिंदुस्तान की जमीन पे ये हो कैसे सकता है? आई वांट दैट दिस प्लेस शुड बी अटैक्ड, द मुजाहिदीन शुड बी डिसलॉज्ड एंड द फ्लैग हैज टू बी। It's a mega Republic newsbreak impact as our champions continue their fight against the Wrestling Federation. The Sports Ministry now has announced to form a 3-member committee that will be probing these serious allegations against the Wrestling Federation chief. The unrelenting fight against the Wrestling Federation bosses continues as the nation is demanding justice for our champions. Vinesh Fogart has raised her voice against the federation, saying that we won't bow down till the chief is sacked, and she also says don't compel us to name and shame people.
What also we saw earlier is a big embarrassment for the left because they came to mark their attendance in wrestlers' protest against the federation. The champions chased out the placard-holding politicians saying, "Don't politicize our fight." And when we come back, we are putting our focus back on this big Republic campaign. Republic with wrestlers, it's seen a huge impact. We are learning that the Wrestling Federation boss will be asked to resign. But the wrestlers say this is not good enough. We want him to be jailed. Most details on... When timeless European design meets cutting-edge technology, it's QO. QO, European Bath Lounges. Right now I'm reporting from the Jantar Mantar of National Capital, and behind me are the wrestlers who are protesting at this point in time. You can see Bajrang Punia sitting there, you can see many other faces who are very known and have got a medal for the country, and they want the federation to be changed. आप पहुंचते हैं सीमा सुरक्षा बल सर। लास्ट पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट वाज डीजीबीएसएफ सर। डीजीबीएसएफ में उन दिनों देखिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कश्मीर की। कश्मीर में उस समय आग लग चुकी थी सर। हाँ, आग लग चुकी थी, बुरी तरह से लग चुकी थी। बीएसएफ के पैर जम चुके थे, बीएसएफ की धाक थी। मैं सोपोर का दौरा कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि दूर कोई झंडा फहरा रहा है। ये किसका झंडा है भाई? उसने बैनर, उनका सर ये पाकिस्तान का झंडा है। मेरे सुनते बदन में आग लग गई कि पाकिस्तान का झंडा मेरे आंख के सामने फहरा रहा है, हिंदुस्तान की जमीन पे ये हो कैसे सकता है? आई वॉन्ट दैट दिस प्लेस शुड बी अटैक्ड, द मुजाहिदीन शुड बी डिसलॉज्ड एंड द फ्लैग हैज टू बी टेकन ऑफ। Indian sport champions continue their protest against the federation. It is a big Republic news break impact. The centre is now likely to form a 3-member committee, sets a 72-hour deadline for the WFI. और हरियाणा के खिलाड़ी भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार बार मौका दिया जाए। और मैं आपको बताने वाला हूँ, इन किसी खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। In the dock for harassment charges, Wrestlers Federation of India blames the champions instead. मेरा बेटा को पुलिस ने भिजाया में सरेंडर कर दिया। बस वो गलत किया तो कर देंगे, बस पुलिस वाला करेंगे। The Telangana BJP chief remains brazen over his son's assault tape, targets Republic TV now. Open and shocking VVIP racism in Bihar's Buxar. A train is stopped for 15 minutes for the chief minister's convoy. The Prime Minister is to visit Maharashtra and Karnataka, set to inaugurate mega development projects. और संचय की सोच के साथ काम कर रहे। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया, तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50। आप पहुंचते हैं सीमा सुरक्षा बल सर। लास्ट पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट वाज डीजीबीएसएफ सर। डीजीबीएसएफ में उन दिनों देखिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कश्मीर की। कश्मीर में उस समय आग लग चुकी थी सर। हाँ, आग लग चुकी थी, बुरी तरह से लग चुकी थी। बीएसएफ के पैर जम चुके थे, बीएसएफ की धाक थी। मैं सोपोर का दौरा कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि दूर कोई झंडा फहरा रहा है। ये किसका झंडा है भाई? उसने बैनर, उनका सर ये पाकिस्तान का झंडा है। मेरे सुनते बदन में आग लग गई कि पाकिस्तान का झंडा मेरे आंख के सामने फहरा रहा है, हिंदुस्तान की जमीन पे ये हो कैसे सकता है? आई वॉन्ट दैट दिस प्लेस शुड बी अटैक्ड, द मुजाहिदीन शुड बी डिसलॉज्ड एंड द फ्लैग हैज टू बी टेकन ऑफ। Indian sport champions continue their protest against the federation. It is a big Republic news break impact. The centre is now likely to form a 3-member committee, sets a 72-hour deadline for the WFI. और हरियाणा के खिलाड़ी
भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार बार मौका दिया जाए। और मैं आपको बताने वाला हूँ, इन किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। In the dock for harassment charges, Wrestlers Federation of India blames the champions instead. मेरा बेटा को पुलिस ने भिजाया में सरेंडर कर दिया। बस वो गलत किया तो कर देंगे, बस पुलिस वाला करेंगे। The Telangana BJP chief remains brazen over his son's assault tape, targets Republic TV now. Republic 48.3%, 374% more viewership than News 18 in super prime time. Content supremacy has destroyed the landing experiment. Republic TV, voice of the people. Getting some breaking news coming in right now, where we can see that the Prime Minister there on your screens, the Prime Minister has arrived. The Prime Minister has arrived, and later on he will be addressing a rally at around 5:48 p.m. The Prime Minister is there he's arriving in Mumbai. Earlier he was in Karnataka. And we're seeing the Prime Minister's Mumbai visit. We'll see a lot of launches of development projects as well. The Prime Minister will hold a public rally at the MMRDA ground. And I'm being joined by Alisha, who's joining us live. Alisha, very good evening to you this Thursday. And now we know that the Prime Minister has now arrived. He's touched down in Mumbai. Over to you, Alisha. Well, yes, we know that Prime Minister Narendra Modi was already reached Mumbai and he's been welcomed by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshari, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and Maharashtra BJP President Chandrasekhar Bawankule. So he's already been touched down, and at any moment from now, when he's going to be in NMRD ground in BKC, where he is going to inaugurate various project development projects and also to lay the foundation stone also various development projects. Now talking about this inauguration which is going to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, where he is going to lay the foundation stone of project worth around 38,800 crore in Mumbai, and he is also going to inaugurate 2 lines of the Mumbai Metro and also the Metro line. Not only this, but he is going to provide seamless urban mobility, where he is also going to dedicate to the nation Mumbai Metro line 2A and 7, which is worth around 12,600 crore. Also during the visit, where the Prime Minister will launch a Mumbai One mobile app and National Common Mobility Card. The app, which will facilitate ease of travel, can be shown at the entry gate of metro stations and support digital payments to buy tickets through UPI. Not only other various projects, including is going to lay the foundation stone of 7 sewage treatment plants, which will be built at a cost around 17,200 crore. And in an effort to strengthen healthcare infrastructure in Mumbai, where the Prime Minister Narendra Modi will also inaugurate 20 Hindu Samrat Bharat Thackeray Aapka Dawakhana, which is to provide essential medical services like health checkups, medicines, investigations and diagnosis completely free to the people. So these are the various development projects which are going to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Mumbai today, where we can already see that he has already been landed and he is being welcomed by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshari, Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and the other dignitaries where now from any time from now, where he is going to reach at the MMRDA ground in Bandra Kurla complex in Mumbai, where there is a huge gathering, a public meeting where he is going to lay foundation stone of the various development projects.
Right, Alisha. Absolutely, Alisha. And we will be tracking the story very closely. The Prime Minister will be addressing the rally around 5:48 p.m. in just a short while. Alisha, thank you and keep us ahead on the story. All right, let's move ahead to some other breaking updates coming in right now. We keep getting you back-to-back updates here on Republic TV. We're getting to know that the MEA has responded to the BBC documentary series of PM Modi. I repeat, MEA response to BBC documentary on Modi. MEA has called the series propaganda that tries to peddle falsehoods about India. BBC is airing a documentary on 2002 Gujarat riots. Indian diaspora in UK has strongly condemned the documentary, viewers. And let's go ahead and first play out this reaction from the MEA before we get to more details. इंडिया में ये देख नहीं सकते, रिव्यू नहीं कर सकते इसको, ये BBC 2 में वहीं पे आ रही है, पर हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है. इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें. सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स इसमें जुड़े हुए हैं इस क्लियरली कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहा है और इस नैरेटिव से, इस स्टोरी से उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं ये. और इससे हमें ये लगता है और ये प्रश्न आता है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या एजेंडा है. और फ्रैंकली जैसे मैंने कहा, हम इसके ऊपर कोई जवाब ऐसा नहीं देना चाहते ताकि इस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्री को कोई डिग्निटी मिले, कोई अच्छी तरह से कोई रिस्पॉन्स करें हम. Right, let's go to Abhishek Kapoor, senior executive editor, who's joining us live from the Delhi newsroom. A very good evening to you, Abhishek. And right now we are seeing that the Ministry of External Affairs has torn into the BBC documentary on Prime Minister Modi and said it is a propaganda. I repeat, a propaganda piece. Abhishek, please take our viewers through this development coming in. Well, obviously, Shivangi, this is a very measured response. Shivangi, this is a very measured response coming in from the Ministry of External Affairs, suggesting that this is a propaganda piece and that does not warrant the dignity of a response, and that they would leave it there. Of course, the spokesperson Arindam Bagchi suggested that this is loaded with propaganda and is aimed at pandering to certain sentiments. So obviously, the BBC, which is known for carrying out its own set of objectives and agenda, and in this case seems to be piling on this sentiment in a certain set of global liberal community that Prime Minister Narendra Modi's rise in some ways perhaps is connected with the Gujarat riots, which it is not, and that's a very shallow and, if I could say, very ignoramus understanding of the complexities of Indian politics. And having said that, the manner in which BBC itself is getting trolled, for example, Shivangi, that in itself brings out certain aspects. So, for example, the manner in which Winston Churchill, I'm going through one of those reactions, carried out transfer of resources from India, including food, and created an artificial famine in Bengal, for example, because the food was transferred to assist Britain's war effort at the time of the Second World War and led to death of millions of people in India. That's something which never gets under focus of the BBC, or for that matter, the manner in which the machinations of the Raj at that time led to the biggest human tragedy on the face of earth at that time, the partition of India, the creation of Pakistan and the transfer of populations. Sorry. So obviously, BBC getting its share of trolling and getting panned for the manner in which it has conducted this documentary. They claim that similar episodes or the part of the series would be on other actors in South Asia.
But the fact of the matter is, this seems to be slanted. Caveat is, of course, that I have myself not seen the documentary. I'm essentially going by what the Ministry of External Affairs has said and how the documentary is being received by those people who have seen. The particular aspect of focusing on Gujarat riots is something which obviously seems to be aimed at pandering to certain sentiments. And remember, Prime Minister Narendra Modi's rise happened much later and was owing to the Gujarat model of development that he first perfected and really then promised to replicate at the national level. It was also a product of the internal dynamics within the BJP and the larger Sangh Parivar. So Gujarat riots did not really play any role in the subsequent rise of Narendra Modi as a national leader in the country. And the BBC, to be harping on that, obviously shows some sense of misplaced priorities. And of course, as some would suggest, since it is, after all, a foreign policy tool in the hands of what can be called the deep state in the United Kingdom. So obviously they are a little uncomfortable with the rise of Narendra Modi and him becoming a very strong leader, not just in India, but globally as well. So perhaps the fact that while on the one hand we have the UK government really clamoring to get a free trade agreement with India, on the other you have these kind of documentaries coming in BBC. We don't know whether this is sort of an internal sabotage, and perhaps the London establishment would want to have a look at it. Shivangi. Absolutely, absolutely, and we are seeing that a lot of a very strong response has been given by the MEA to about this documentary. Abhishek, and if you could take our viewers through exactly what we are seeing so far. We know that the BBC documentary, it's called The Modi Question, that was withdrawn from YouTube a short while back. Yesterday, the first part of the documentary was withdrawn from YouTube. Just a day after the first part was telecast, it was taken off. Now, we know that the second part will be released soon. So, do we know that will that be stopped from being released, or any detail about that as well, Abhishek? No. So, you see, it's not, as the External Affairs spokesperson mentioned, that this is a documentary which is not shown in India, which is for consumption of BBC audiences, perhaps outside India, and for them to understand what Indian politics is. Obviously, they have really misread it. So, for example, I'm going through this reaction coming in from Lord Rami Ranger, for example, from the British House of Lords, and it says that BBC, you have caused a great deal of hurt to over 1 billion Indians. It insults a democratically elected Prime Minister, Indian police and the Indian judiciary. We condemn the riots and loss of life and also condemn your biased reporting. So that's a very objective, fair view. You see, whatever happened in Gujarat has gone through the courts at all levels for almost 2 decades. We saw how the due process of law was really misused. M.R. Venkatesh, in fact, joins us over the phone. Mr. Venkatesh, the fact that for 2 decades we saw Gujarat riot cases going through all levels of the judiciary, and in fact, as the latest developments in the Teesta Setalwar case really show, that the due process of law and the judicial process was used, abused, misused in the aid of certain objective and agenda to really put the Narendra Modi government at that time on the mat. In fact, to really somehow stop the rise of Narendra Modi as a national leader, and despite that he became Prime Minister on the back of a massive wave in support of him and his model of development politics that he practiced. You think BBC obviously is pandering to certain sentiments, a case of sour grapes, and so at least in the among the chatterati of that liberal class, both in India and outside, perhaps they are creating this documentary just to pander to those sentiments, and has really no connection with whatever happened on the ground. And as Lord Rami Ranger mentioned, this is an insult to the judicial processes, constitutional mechanisms, and of course, in fact, the democracy as we practice in India. Niranjan, we are a very proud country and we are a sovereign country. We may have certain problems, but we are eminently capable of dealing with it. We don't want any bloody foreigner to poke their nose in this. Having said this, in the run-up to the 2024 elections, I foresee many of these
forces are going to come together, aiding and abetting the internal forces like the Congress Party and the Communist Party. They're all going to come together to have a final go at Mr. Modi. And they are very clear that they cannot fight Mr. Modi either politically or legally. As you very rightly said, the Supreme Court, using the process of law, several times over to a committee established by the Supreme Court, headed by the CBI Director, Mr. Raghavan. All these have been repeatedly done, redone several times. And finally, they have come to a conclusion there is no hand of Mr. Modi in the riots, and they have all buried it. But repeatedly, this dead body, the carcass of 2002, is exhumed by these busybodies, by these anti-India media all across the world, to only show us in poor light, only to defame India. India is rising spectacularly. India is now the hottest destination for foreign investment, domestic investment. It is the sole bright star in economic performance. It is the only country probably which is very close to the Western powers and also to the Russia. India's foreign policy has been a spectacular success. And the Western powers have put their money on Pakistan. So look at Pakistan. Whether it is going to break into 4 or 5 is the question. Now, all these forces are now finding that the man singularly responsible for these developments positively for India the last 8-10 years is Mr. Modi. And they somehow feel that 2024, if they get him, and if they block him from becoming the Prime Minister, India's progress can be stimulated. That is the larger issue all Indians need to understand. It is not Mr. a fight Venkatesh. against Modi, it is a fight. It's a fight against me. MR. It's a fight against you. Yeah. Yeah. MR, hold on. In fact, Lord Rami Ranger is joining us over the phone from London. Lord Ranger, you see a sentiment being expressed here on the ground as, as exemplified by what MR Venkatesh just said, that this is not an attack on Narendra Modi. This is, in fact, an attack on him as a citizen of the country and indeed the democracy that India practices. You think there are some elements in the United Kingdom and it goes really back to that period when the US mission, or beg your pardon, UK mission here in Delhi would be making statements, visiting Gujarat, making adverse comments, and the whole visa issue of denial of visa issue to Narendra Modi. So there are elements within the UK establishment, possibly the deep state, who think the rise of Narendra Modi is not good for the West, and that's why create these kind of controversies. Lord Ranger. Envy is attracted by a successful person. You envy envy a person who is more successful, more dynamic and more progressive. You do not envy people who are going nowhere. They are just going backwards. So Prime Minister Modi will attract a lot of animosity from people because they see he's steering India to a level never seen before. He's going to take India to the rightful place where it belongs. India was a cradle of civilization, the oldest civilization, 6,000 years old. We are ahead in every field, science, mathematics, astronomy. You just have to look at the temples, 2,000 old years temple, and to realize how the architects marvel exists without the crane, without the modern machinery, without the modern computer, how these people build those beautiful monuments or temples you see today. That is the strength. India was considered to be a Sone ki Chidiya, and Prime Minister Modi is going to make that happen. And these people cannot tolerate that India, once upon a time, their colony, they have not only given the doctors, engineers, teachers to the world, the scientists, they are also given Prime Minister to Great Britain. The richest man in the United Kingdom is Indian. Most industrialist businessmen are Indian. And we are doing so well, whereas the Pakistani have the highest prison population, grooming gang, all sorts of crime, drug dealing, and all this nonsense they get. So therefore, helping to appease a community is one thing, but to damaging your own social cohesion by bringing religious hatred in United Kingdom is another thing. We are 5 million people of Indian, Pakistani, Bangladeshi origin. We should be working together. We have one country, one queen. Right. We have become one. So to divide us on the basis of religion by bringing news which issue having few biased anti-Modi participants in the program is not going to change India's narrative. India is a very powerful country.
and we will keep on. as कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं काफले चलते हैं. Right, We sir. will carry on moving. Our aim is to become a positive global force Right, sir. helping the developing nation. Right, so thank you so much, Lord Rami Ranger there. Envy or malice, but the point is that this has potential to adversely affect India-UK relations. Somebody there in London and the Westminster should be watching it up close. On that note, let's cut to Prime Minister. He's speaking live from Mumbai. All right, viewers, so the Prime Minister there in Mumbai, he will be speaking very soon. We'll wait for that speech of his shortly. But the Prime Minister is in Maharashtra to launch many projects worth around 38,800 crores. He will be inaugurating 2 metro lines, which are estimated at about the cost of 12,600 crores. It will happen very shortly. We're just waiting for that speech to start very soon. The Prime Minister there in Mumbai. And as we wait for the Prime Minister to start speaking, the Mumbai Traffic Police has issued an advisory banning heavy vehicles on all roads, including Western Express Highway in the western suburb till 9 p.m. today. And we also know that the Metro Line 2A Yellow Line is going to be inaugurated. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. जे लोक खुर्चीवर उभे आहेत त्यांनी खुर्चीवर बसावं अशी त्यांना विनंती करतो. आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अखिल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी डावोस से 1,55,000 करोड़ के एमओयू करके आए हैं, ऐसे हमारे एकनाथ शिंदे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, सभी सांसद, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी, मुंबई के अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां विराट संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या वतीनं आदरणीय मोदीजींचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. प्रधानमंत्री जी, आप तो हर जगह लोकप्रिय है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकप्रियता की कोई कंपटीशन होगी तो आपकी लोकप्रियता में नंबर 1 पर मुंबई होगा. ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं. इतना प्रेम मुंबई करो का आपके ऊपर है. और मुझे याद है 2019 में आपने यहां से ही कहा था कि 5 साल की डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र को बदला है और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाई है. आपके शब्द पर विश्वास रख के महाराष्ट्र की जनता ने डबल इंजन की सरकार लाई, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए 2.5 साल जनता के मन की सरकार नहीं बन पाई. लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी एकनाथ शिंदे जी ने हिम्मत की और आपके आशीर्वाद से फिर एक बार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जन के मन की सरकार यहां पर तैयार हुई और फिर एक बार महाराष्ट्र विकास की दृष्टि से जोरों से भागने लगा. आज कई कार्यक्रमों का उद्घाटन, भूमि पूजन हम करने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होगी तो प्रधानमंत्री स्वनिधि का कार्यक्रम.
राजनीति कैसी होती है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वाले, फुटपाथ दुकानदार, हाथ ठेले वाले, पान ठेले वाले सभी का विचार करके उनके लिए स्वनिधि की रचना की। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि ये जो गरीबों को पैसे मिलने वाले हैं, इस योजना को स्थगित किया जाता है, इसको लागू नहीं किया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो गरीब लोग थे, फुटपाथ दुकानदार थे, फेरी वाले थे, उनको रोक दिया गया। लेकिन वापस सरकार आने के बाद यहां पर हमने हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक की और उस बैठक में हमने ये तय किया कि मुंबई में 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, फुटपाथ दुकानदारों को, फेरी वालों को हम लोग स्वनिधि का फायदा देंगे। और आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि 1 लाख का आंकड़ा पार करके 1,15,000 तक हम लोग पहुंचे हैं। हे जे छोटे छोटे फेरी वाले आहे, फुटपाथ दुकानदार आहे, या सगळ्यांना आज या ठिकाणी स्वनिधीचा पैसा मिळतोय आणि जसा मुंबईत मिळतोय तसा आता इतर ठिकाणी देखील हा या ठिकाणी मिळणार आहे। आज माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते हे काम आपण करतोय। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जी, शायद आप अकेले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे कि जिन्होंने जिन जिन योजनाओं का भूमि पूजन किया, उन योजनाओं के उद्घाटन को भी आप ही उपस्थित है। आज ये जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर मेट्रो 7, मेट्रो 2 है, इसका भूमि पूजन भी आपने किया था और उद्घाटन भी आप कर रहे हैं। ये नया कल्चर इस भारत में और महाराष्ट्र में आपके कारण आया है। मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्व की बात, आज मुंबई करता एसटीपी, मुंबई सारखं इतकं महत्वाचं शहर, या शहरामध्ये रोज हजारो नाही करोडो लिटर पाणी ट्रीट न करता, कुठली प्रक्रिया न करता आम्ही समुद्रात सोडत होतो। हा समुद्राचा वास, समुद्राची घाण ही त्याच्यामुळे होती। 20-20, 25-25 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेवर ज्यांनी राज्य केलं, त्यांनी केवळ डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट केले, स्वतःची घरं भरली, पण मुंबईकरांना Right now I'm reporting from the Jantar Mantar of National Capital, and behind me are the wrestlers who are protesting at this point in time. You can see Bajrang Punia sitting there, you can see many other faces who are very known and have got a medal for the country, and they want the federation to be changed. आप पहुंचते हैं सीमा सुरक्षा बल सर। लास्ट पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट वाज डीजीबीएसएफ सर। डीजीबीएसएफ में उन दिनों देखिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कश्मीर की। कश्मीर में उस समय आग लग चुकी थी सर। हाँ, आग लग चुकी थी, बुरी तरह से लग चुकी थी। बीएसएफ के पैर जम चुके थे, बीएसएफ की धाक थी। मैं सोपोर का दौरा कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि दूर कोई झंडा फहरा रहा है। ये किसका झंडा है भाई? उसने बैनर, उसने कहा सर ये पाकिस्तान का झंडा है। मेरे तो सुनते बदन में आग लग गई कि पाकिस्तान का झंडा मेरे आंख के सामने फहरा रहा है, हिंदुस्तान की जमीन पे ये हो कैसे सकता है? आई वांट दैट दिस प्लेस शुड बी अटैक्ड, द मुजाहिदीन शुड बी डिसलॉज्ड एंड द फ्लैग हैज टू बी टेकन आउट। Indian sport champions continue their protest against the federation. It is a big Republic Newsbreak impact. The centre is now likely to form a 3-member committee, sets a 72-hour deadline for the WFI. और हरियाणा के खिलाड़ी भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार बार मौका दिया जाए। और मैं आपको बताने वाला हूँ, इन किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। In the dock for harassment charges, Wrestlers Federation of India blames the champions instead. मेरा बेटा को पुलिस ने भिजाया, में सरेंडर कर दिया। बस वो गलत किया तो कर देंगे।
Republic 48.3%. 374% more viewership than News 18 in super prime time. Content supremacy has destroyed the landing experiment. Republic TV, voice of the people. Big impact of the Republic campaign. Wrestling Federation chief could be resigning anytime now. Big victory for sporting icons. Wrestlers meet sports ministry panel. Resignation possible amid pressure, but will the WFI boss be arrested? Delhi Women's Commission chief sexually harassed on the streets of New Delhi while inspecting women's safety. Prime Minister Modi leads election campaign, inaugurates projects in Karnataka. He's in Mumbai now. Thank you for staying with us here on Republic TV. There's a big story developing in Chhattisgarh, and the BJP claims under the Baghel government there's been a cover-up and they're making a few serious charges. They're accusing the Chhattisgarh Chief Minister of conspiring against Raman Singh and his family. There is a huge allegation made for which the BJP claims there is proof as well. Let's play out what the BJP is saying there. सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सरकार के वहां के लायर, जिसको आप और हम बोलते हैं वहां के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वह चीज लेकर के आए कि किसी व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का कृत्य हो सकता है। अपने विरोधियों को फंसाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना सकते हैं, वो हथकंडे के आधार पर लोगों ने अपने चैट के माध्यम से आदान प्रदान किया, अपने मोबाइल के माध्यम से करस्पॉन्डेंस किया और उन्होंने एक एक तथ्य बताया कि इस प्रकार से इसको ऐसा करना चाहिए। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उस समय कुछ लोगों ने इसको संज्ञान में लेने की कोशिश। Going across straight to the pictures, the big rally in Mumbai, the Prime Minister is here. The Prime Minister being received by thousands of people. Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra, speaking. Let's cut across live. किती झाला ते आपल्याला माहित आहे आणि अगदी ठप्प झालेल्या कामांना खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी आणि जो काही लोकोपयोगी योजनांचा खऱ्या अर्थाने श्वास गुदमरला होता, त्यातून या राज्याची आणि जनतेची, मुंबईकरांची सुटका करण्याची संधी आम्हाला मिळाली। ते केवळ आदरणीय मोदी साहेबांसारख्या धाडसी नेत्यामुळे आणि नेतृत्वामुळे। मैं जब भी मोदी जी को देखता हूं, जब भी उनसे मिलता हूं, मेरे मन में एक पवित्र भाव पैदा होता है। उनके व्यक्तित्व में कुछ खास है जो हमें विश्वास और ऊर्जा देता है।
मुंबईकरांचं जगणं सुसह्य करण्याची सुरुवात खऱ्या अर्थाने आज झालेली आहे. आणि येत्या 2-2.5 वर्षामध्ये The efforts to make Mumbai या मुंबईचा the life better कायापालट of आपल्याला people of पाहायला Mumbai has मिळेल. just started. खऱ्या अर्थाने We're ushering a new era. आजच्या दिवसाची सुरुवात ही सुवर्ण अक्षरात नोंद करावी अशीच ठरेल असं मला खात्री आहे. Today's day will be etched in अक्टूबर 2015 will be में etched for the future. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी मेट्रो का भूमि पूजन किया था जब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, और आज उन्हीं के हाथों से इस सेवा का लोकार्पण हो रहा है. यह बहुत ही बड़ा दैवी योग है और इसीलिए मैं मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि हमारी विनती को उन्हें मंजूर किया उन्होंने और यहां पधारे हैं. इसलिए हम सब लोग उनके आभारी हैं. महाराष्ट्र के लोग खुशनसीब है कि जिन हाथों से आगाज हुआ था आज उन्हीं हाथों से अंजाम दिया जा रहा है. ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कई लोगों की मंशा, इच्छा, अपेक्षा थी कि यह कार्यक्रम मोदी जी के हाथों से ना हो, लेकिन नियति के सामने किसी का नहीं चलता है. और ये आज जो आप लोग देख रहे हो, हमारी मंशा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी अपेक्षा थी, इस महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा थी, मुंबई वासियों की अपेक्षा थी, जो ये मुंबई के लिए जो हम लोग यहाँ पर जो विकास के प्रकल्प ला रहे उसका भूमि पूजन और लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो. और आज यही गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये म्हणजे वर्षाच्या समारोपामध्ये देशातल्या गेम चेंजर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग नागपूर मुंबईचा शुभारंभ मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते झाला. Last year in the month of December, Prime Minister Modi inaugurated the Bala Thackeray Expressway in Nagpur. आणि मेट्रो आपण सुरू करतो आहोत. And with Prime Minister Modi today in Mumbai, we are going to inaugurate metro project. आजचा हा कार्यक्रम आपल्या राज्याच्या राजधानीमध्ये एक अभूतपूर्व सोहळा आपण या ठिकाणी करतो आहे. It's a very special occasion in the capital of Maharashtra today. नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा महामार्ग झाला. महाराष्ट्राची समृद्धी एक्सप्रेसवे is a highway connecting Nagpur to Mumbai. दाखल होती आहे. आणि खऱ्या अर्थाने आमचं दोघांचंही स्वप्न होतं की मेट्रोच्या रूपाने देखील हे दुसरं स्वप्न आपल्या मुंबईकरांचं साकार होताना आपण पाहतोय. It was our dream that we will fulfill the aspirations of the people of Mumbai on the metro. पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचं जिव्हाळ्याचं नातं होतं, आपल्याला मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. There is no need for me to mention that Bala Thackeray and Prime Minister Narendra Modi shared a special bond. Hindu and Hindutva was the common thread between them. होता. तेच सूत्र धरून अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा प्रकल्पांचं भूमिपूजन करण्यासाठी Hindutva and development as the foundation, Prime Minister Modi has आमंत्रित केलं आणि या conducted all development programs, and we had invited Prime Minister Modi to inaugurate these development projects, and I thank him for coming to Mumbai for the inauguration. मेट्रो आहे, त्याचबरोबर आपल्या शिवडी नावाशेवा जो ट्रान्स हार्बर लिंक आहे, या देशातला सगळ्यात लांबीचा सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज आपण करतोय. त्याचं शिवडी नावाशेवा लिंक will be the nation's first single largest sea link. रस्ते आहेत, it will be inaugurated in a few months. महामार्ग आहे आणि खऱ्या अर्थाने देशातलं एक आदर्श असा वाहतूक आणि दळणवळण आराखडा
आपण या महाराष्ट्राच्या माध्यमातून आपल्याला जगासमोर ठेवता येईल त्याचाही मला With a wide network of roads, highways and transport facilities, we will set an example for the country. लाखो मुंबईकरांना त्याचा फायदा होईल. जवळपास 350 Lakhs of Mumbaikars will be benefited with the inauguration of this metro. चालना मिळाली. परंतु मधले जे काही 2.5 वर्ष गेले ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, त्याच्यामध्ये मी जात नाही. परंतु We know what happened in the last 2.5 years. The project, the metro project that was started by Devendra Fadnavis, were halted for the last 2.5 years. युद्ध पातळीवर आपण सुरू केलं. With the government coming back to power, we have started the projects on war footing. या रस्त्यावरचे 30 ते 40 लाख वाहनं ही रस्त्यावरून निघतील. या लोकांचा वेळ वाचेल, प्रदूषण कमी होईल, लोकांच्या जीवनामध्ये a lot of travel time will be cut down, pollution will be cut down because of the metro services. म्हणून या ठिकाणी केवळ रस्ते, पूल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे विकास नाही असं आपण म्हणतो. आणि म्हणून विकासाला मानवी चेहरा पाहिजे. आज आणखी या मुंबईकरांच्या आरोग्यामध्ये चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना देखील आपण आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते सुरू करतोय. We're also starting Maharashtra, we're starting clinics, government clinics, and Prime Minister Modi will be inaugurating it so as to ensure proper health facilities for the people of Maharashtra. हे एसटीपीचं जे काय त्यांनी सांगितलंय की किती वर्षापासून हे प्रलंबित होते, परंतु इच्छाशक्ती पाहिजे. आणि इच्छाशक्ती दाखवल्यामुळे आज जे केले अनेक वर्ष प्रलंबित प्रश्न आपण सोडवतोय. काँक्रीटचे रस्ते, because of the willpower that this government has, we have been able to solve a lot of problems for the people of Maharashtra. या आज 400 किलोमीटर काँक्रीटच्या रस्त्यांचं भूमिपूजन आदरणीय प्रधानमंत्री करतात. Prime Minister Modi is inaugurating a concrete road of 400 kilometers. काँक्रीटचे करतोय. म्हणजे पुढच्या 2-2.5 वर्षामध्ये संपूर्ण मुंबई खड्डेमुक्त होईल आणि लोकांचं जीवन सुसह्य होईल. परंतु आपण पाहिलं की याला देखील खोडा घालण्याचं काम काही लोक करतायत. त्यांना त्यांचं काम करू द्या, आपण आपलं काम करू, एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. आणि दरवर्षी जे खड्ड्याचा प्रवास, लोकांचे अनेक खड्ड्यांमुळे गेलेले बळी, पहुंचते सीमा सुरक्षा बल सर. लास्ट पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट वाज डीजीबीएसएफ सर. डीजीबीएसएफ में उन दिनों देखिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कश्मीर की. कश्मीर में उस समय आग लग चुकी थी सर. हाँ, आग लग चुकी थी, बुरी तरह से लग चुकी थी. बीएसएफ के पैर जम चुके थे, बीएसएफ की धाक थी. मैं सोपोर का दौरा कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि दूर कोई झंडा फहरा रहा है. ये किसका झंडा है भाई? उसने बैनर, उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तान का झंडा है. मेरे तो सुनते बदन में आग लग गई कि पाकिस्तान का झंडा मेरे आंख के सामने फहरा रहा है हिंदुस्तान की जमीन पे. ये हो कैसे सकता है? आई वांट दैट दिस प्लेस शुड बी अटैक्ड, द मुजाहिदीन शुड बी डिसलॉज्ड एंड द फ्लैग हैज टू बी टेकन ऑफ. Indian sport champions continue their protest against the federation. It is a big Republic Newsbreak impact. The centre is now likely to form a 3-member committee, sets a 72-hour deadline for the WFI. और हरियाणा के खिलाड़ी भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार बार मौका दिया जाए. और मैं आपको बताने वाला हूँ, इन किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है. In the dock for harassment charges, Wrestlers Federation of India blames the champions instead. मेरा बेटा को पुलिस ने भिजाया में सरेंडर कर दिया. बस वो गलत किया तो कर देंगे. बस पुलिस वाला करेंगे. The Telangana BJP chief remains brazen over his son's assault tape, targets Republic TV now. Open and shocking VVIP racism in Bihar's Buxar. A train is stopped for 15 minutes for the chief minister's convoy. The Prime Minister is to visit Maharashtra and Karnataka, set to inaugurate mega development projects.
2 वर्षात काय होईल आणि म्हणून याचा सगळ्या